Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss an important topic, a topic which always remains in the news. So if you read any newspaper, so this topic, that is FATF, always remains in the news. If you read any newspaper, whether this is the Hindu, Indian Express or any other newspaper, I am sure you must have come across this topic, right? So in fact, recently also I was reading some news articles in the Hindu newspaper a few days back, I would say 2-3 days back. So that is why I have decided that let's take a separate class on FATF and things related with that, because of course this will be an important session. So I think I'm audible, visible. Is everything fine? Adrija, namaste, Krishi Sardeva, audible, visible. Thank you. I think clear है? So I think fine. I think मेरी आवाज साफ है ना? A sort of a session. It's a test taking strategy session, and if you see, this will be on. Let me change the color of the pen. 28th July, that is Sunday, 9:30 a.m. and this will be online. Now, how to watch this? Race to NLU. So सामने में आपके you can see the QR code. So after the class is over, you will be given a recorded video, so you can scan it with the help of your camera. Sometimes your camera will not work, so in that case you can download Google Lens app, and with the help of which also you can scan the QR code. Once you scan the QR code, you will get a link. जैसे ही आप QR code को scan करोगे, आपको एक link मिलेगा और उससे आप इस link तक पहुंच सकते हो. If you are not able to reach to the link, then it is very simple. Nothing to worry. QR code भी scan करने की जरूरत नहीं है. Just search on Google Career Launcher Race to NLUs. You will get this link. This is the link, lawinterestexam.com, lawinterest.com. So this, just click on it, and this is actually the page that you will land. So basically आपको इस page पर पहुंचना, चाहे आप इससे पहुंचो या इससे पहुंचो, both are same thing. Either you can reach through QR code or through this. Okay. So here actually they'll tell you actually how to have a smart test taking strategy to improve your scores. Okay. These are the things. A balanced approach to all sections of the exam will improve your chances of securing NLUs. So these are the things that will be taught you here. 28 July याद रखिएगा, ऑनलाइन मोड में. CLLST के स्टूडेंट तो फ्री है. If you are not a student, then 48 rupees total लगेगा. So just by paying 48 rupees, तो अपना name, email ID, mobile number, etc. डालो, and you can watch. Please remember the date, 28 July, 9:30 a.m. ठीक है? That's most important. ठीक है? If you have any query, अगर कुछ पूछना होगा तो यहाँ पूछ सकते हो. ये दोनों नंबर है टॉप में. On the top right, you will find 2 numbers. Here you can read more about it, get to know more about it. चलो अब चलते हैं. Let's come back to our topic. So I was talking about FATF, Financial Action Task Force. Okay. India plays को क्या कुशाग्र, I think you have joined late, so you can watch it. ठीक है, ये आप देख लेना. So there'll be a sort of a workshop type, है ना, where you will get to know how to actually handle the mocks and test taking strategy, etc. तो ये सब यहाँ बताया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लेना. याद से डेट्स, प्लीज रिमेंबर द डेट. खैर, so basically अगर आप देखो ये 9 जुलाई का आर्टिकल थी. इंडिया प्लेज की रोल इन ब्रिंगिंग आउट FATF's लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क. ओके. देन एक और आर्टिकल थी 10th जुलाई को, FATF. Then I had seen articles even in Indian Express also. ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, and that is why I have decided to discuss it explicitly this topic. ठीक है, मैंने इसीलिए खास करके ये टॉपिक चुना है. तो let us begin. I have told you that I use question and answer to discuss the topics. So here is the first question. What is the full form of FATF? Your options are Financial Action Against Terror, Financial Action Task Force, Fraudulent Action and Terror Funding, Financial Action, Terror and Fugitive Force. What is the right answer? And I think it is a very easy question. So you all should be knowing it because it always remains in the news. Yes, B is the right answer. Very good. Adrija, Krishi, Sachdeva, Kushagra, Hari, Harsh. You all are right. Financial Action Task Force is FATF full form. ठीक है? So B is the right answer to this question. है ना? तो ये आपको पता होगा. This is the logo. ठीक है?
of FATF that you should be knowing. The next question is FATF is what? Now, why I have given you this option? Because similar question was asked in CLAT 2022. Exactly, the option, these 4 options were there. Although the question was slightly different. यहाँ पे कुछ और लिखा था, but these 4 options were given in CLAT 2022. So that is the reason. See, that's why I'm making questions along the pattern, है ना, in line with what they're asking. ठीक है, जिस तरह से पूछ रहे हैं उसी तरह से मैं आपको पूछ रहा हूं. अच्छा, कोई बता सकता है what was the question in 2022? Because I have told you time and again, from 2020 onwards, 2020 से 2025 तक, PYQs of CLAT, please keep it with yourself. It's better if you have a hard copy printed. If not, then at least you should have in your mobile phones, laptop, etc. ठीक है. So ये 2020 से लेके 2025 तक का CLAT का PYQs आपके पास एकदम रेडीमेड मौजूद होना चाहिए. नहीं, आईसीसी से रिलेटेड नहीं था, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रिलेटेड पूछा गया था. ठीक है. So here the right answer is B, intergovernmental organization. Yes, very good. Krishi Sasdeva, Hari, Harsh, Adrija, Kushagra, you all right. Can't believe you two randomly suggested me your video. Oh, great, Mayank Yadav. I'm very happy to see that an old student of mine is watching my class. Great. So I'm sure you must have got benefited from me. I'm sure. Yes. Fine. So yes, B is the right answer. Okay. So this was the question. Acha, ab is question ka answer batao. Please tell me the answer to this question. Batao, please tell me the answer to this question. Again, intergovernmental organization. UN Human Rights Council is which organ? So intergovernmental organization. अब लोग इसमें confuse करते हैं कि चारों का मतलब क्या है. You should know the meaning of all 4, right? है ना? ठीक है. तो पहले हम ये बता देते हैं कि ये intergovernmental organization FATF is also, है ना. तो पहले first of all you understand what is intergovernmental organization. So here the answer is A. Intergovernmental तोड़ते हैं. देखो, let's break it. अगर हम बोलेंगे इंटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर सिटी एंड इंट्रा सिटी? ये 2 टर्म आपने सुना होगा. इंट्रा का मतलब होता है विद इन, तो विद इन द सिटी, एंड इंटर सिटी मींस बिटवीन 2 सिटी. देखो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम बोलते हैं इंटर सिटी बस सर्विस. इफ आई से इंटर सिटी बस सर्विस, इट मींस लेट्स से फॉर एग्जांपल, इंटरसिटी, मान लीजिए लेट्स से आई एम सेइंग दैट दिल्ली टू जयपुर bus service is there. So this I will say intercity bus service. It means between 2 cities. But if I say within the Delhi, there is a bus service from Karol Bagh to, let's say, Dhaula Kuan. These are the 2 places in Delhi. Just I'm explaining it. So these are the 2 places within Delhi. So I will call it as intra-city bus service. Intra-city means within the city, उसी शहर के अंदर. तो आप समझ गए इंटर और इंट्रा का डिफरेंस. सो व्हेन आई से इंटर गवर्नमेंट, मतलब क्या है? बहुत सारी गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट 1, गवर्नमेंट 2, गवर्नमेंट 3, गवर्नमेंट 4, डिफरेंट गवर्नमेंट्स आर कमिंग. तो गवर्नमेंट्स को तोड़ के आएगी नहीं. सो गवर्नमेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज गवर्नमेंट्स आर मेंबर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी. यस. And so government does not come, but government's representative come, and ambassadors, foreign service officers, and ministers, etc. come, and foreign ministers, head of the state. इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके जो मेंबर्स है वो गवर्नमेंट के हेड ऑफ द स्टेट्स वगैरह आते हैं या उनके गवर्नमेंट के मेंबर्स आते हैं. ठीक है. सो इज राइट. नॉन गवर्नमेंट मतलब क्या? जैसे एनजीओ वगैरह हो गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. जैसे अपना नाम सुनोगे कि एनजीओ है प्रथम, है ना. वो रिपोर्ट क्या नाम है उस एनजीओ का जो प्रथम रिपोर्ट निकालता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिपोर्ट? प्रथम रिपोर्ट. एसर रिपोर्ट निकालता है ना, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. एनजीओ ऐसे वैसे आप जानते होंगे, आई एम श्योर.
क्वाजाई मतलब क्या होता है? क्वाजाई मतलब होता है सिमिलर टू। देखो ये टर्म ना लीगल टर्म्स में बहुत यूज किया जाता है, जैसे हैव यू हर्ड दिस टर्म क्वाजाई जुडिशियल बॉडी? हैव यू हर्ड दिस बिफोर? क्वाजाई जुडिशियल बॉडी। ओके, मैं बताता हूं जैसे क्वाजाई कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ हाँ वो तो हो गया, नॉन कमेंट करने बता दिया प्रथम, राइट? हाँ, क्वाजाई जुडिशियल, फॉर एग्जांपल let's say election commission of India is a quasi judicial body, because in some cases election commission has some judicial powers similar to judicial power, like press council of India is a quasi judicial body. हाँ, जैसे केसी वियर has said that India is a quasi federal, although this is not technically correct, we are completely federal, but KC Vier has said that India is quasi federal, means similar to federal. So quasi word यूज किया जाता है। तो मल्टी स्टेक होल्डर जो होता है ना, वो बहुत ब्रॉड टर्म होता है, means there are multiple stakeholders, means for example there can be organizations, individuals, communities, diverse groups, okay, मतलब NGOs, private companies, communities, सबको इसमें आते हैं, उसको कहते हैं multi stakeholders, okay. That sometimes there are organizations which allows even private individuals, NGOs, everyone to allow and become a part of that, उसको multi stakeholder term use करते हैं, ठीक है? So ये पता होना चाहिए, because of course if it gets repeated then you should be knowing, है ना? So B is the right answer, intergovernmental organization is the right answer to this question of FATF. Chalo, let's move on. FATF was established in the year 1987, 81, 91, 89. हाँ, ट्रिब्यूनल्स के लिए भी क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी वर्ड लिखते हैं, राइट? हाँ, कब एस्टैब्लिश हुआ था FATF? And I think it's easy. WAF tribunal also, right? हाँ. So the right answer is D, 1989. ठीक है. So 1989 में it was established. Please remember the year because FATF is very much in the news. The next is FATF was established on the initiative of G20, G7, BRICS, ASEAN. What is the right answer to this question? किसके initiative? I had discussed it. I still remember. So I believe that you all should be answering. है ना? ये पता होना चाहिए, guys. Confidently you should answer. The right answer is very good. Nivedita, Krishi, Sachdeva, Kushagra, Harsh, you all are right. The right answer is G7. B is the right answer. जब हम G7 की बात कर रहे थे, please watch the G7 class if you have not watched. आप सब्सक्राइब करो चैनल को, go to the live section, scroll down. ठीक है, नीचे मूव करते जाओ, यहाँ पे मिलेगा. All about 51st G7 summit. This happened recently. I mean, last month I would say. So please watch this. This is very, very important. Here I had discussed a little bit about FATF also. थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था इसमें. And you should watch this class. Otherwise, अगर नहीं मिले, so search this on YouTube. ये सर्च करना and you will get this class. ठीक है? Okay, let's move on to the next one. The next question is the original mandate of FATF was. See, read the question carefully. To combat money laundering, to combat terror financing, to extradite the fugitive economic offender, to help Interpol in issuing होगा. Yeah, to help Interpol issue red notice. Original mandate यानी शुरू में जब बना था तो किस मकसद से बनाया गया था? When it was made, what was the purpose of making it? हाँ, very good. A is the right answer. Yes, Kushagra, Adrija, Harsh, Nivedita, Krishi, Sachdeva, Hari, you all are right. To combat money laundering. Now it is both A and B. Right, Krishi, Sachdeva, right. So money laundering का मतलब क्या हुआ? Means transaction or movement of money in an illegitimate way, illicit way, from one place to another place. यानी पैसे का, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि पैसे का हेर फेर करना, है ना? So, or let's say untaxed money, you have not paid the tax, है ना? या movement of black money, है ना? इसको हवाला भी कहते हैं. I'm sure you must have heard this term, हवाला. There is also one more term associated with it, hundi. बताइए, ये वाला किसी एग्जाम में पूछा था, स्टैंडर्ड गवर्नमेंट एग्जाम में. So sometimes they repeat it. Hawala, hundi, these are actually the methods of money laundering or movement. So for that, yes, very good. In India, we have PMLA, Prevention of Money Laundering Act 2002 was passed, under which Enforcement Directorate has powers. Yes, Kushagra, we are coming to that. Just wait. Hold on. ठीक है. So ये money laundering है. मतलब मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ये जो काले धन है या फ्रॉड तरह से पैसा कमाया उसको इधर से उधर करना या किसी इलीगल काम, इलिसिट काम के लिए यूज करना, दैट्स कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग.
So money laundering is actually used for different illegal, illegitimate purposes also. Now later on, लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा अपना broaden कर दिया, and they added this also later on. So in which year this was added? This mandate was later on added. क्योंकि मैंने original पूछा था, so the answer is option A. But now both A and B are now for today. FATF, both A and B is right. है ना? So to combat terror financing, this was added after. Yes, very good, Koshagra. 9/11 attacks. So basically, it means 11th September 2001 terror attacks on Washington, not Washington, World Trade Center. After that, this was explicitly added. So basically, you're right. 9/11 attack. Yes, you're right. Yes, Adrija and Koshagra, you both are right. अच्छा एक चीज और बताए थे. Whenever we talk about money laundering, so money laundering curbing की जब बात होती है, सब कुछ आ जाता है इसमें, because money laundering is used for various purposes. For example, arms race या arms gun running कहते हैं. Gun running, illegal arms trade हुआ. Human trafficking, drugs trafficking, these all are, so money from these will be considered as money laundering. Terror financing, तो टेक्निकली उसके अंदर आता है, लेकिन उसको अब नाउ इट हैज बीन डिफाइंड सेपरेटली. टेरर फाइनेंसिंग and there are many other prostitution rackets, flesh trade, etc. These all are actually related with the money earnings through this is actually used for committing organized crimes. So I'm giving just a basic idea. Okay, उतना डिटेल नहीं जाना है, but just you understand this concept and all. So that is what, to curb this, FATF was formed. Okay, now let's move on to the next one. Where is the headquarter of FATF? New York, Paris, Berlin. FATF has no headquarter. बताइए क्या सही जवाब है? Yes, Hari, you are right. Koshagra, Saxena, Adrija, you all are right. Krishi Sachdeva, right, very good. हाँ. The right answer is Paris में. B is the right answer. ठीक है. Now Adrija, you are right. हाँ, B is the right answer. ठीक है. So let me show. OECD का हेडक्वार्टर भी वहीं पड़ता है. OECD we will also discuss. इंडिया, यहाँ पे फ्रांस है. Here is Paris. देखो पेरिस में आपको OECD का भी हेडक्वार्टर मिलेगा. यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा. यूनेस्को. ठीक है. Then FATF का हेडक्वार्टर मिलेगा. और भी बहुत सारी चीजें. There are lot of other things. But just have an idea. हाँ मैंने 100 times बोला होगा, right? We have discussed so many times that Paris में हेडक्वार्टर है. How many members currently are there in FATF? आर पूछो, देखो क्वेश्चन को ध्यान रखना. आर देयर मतलब करंट पूछ रहा हूं, आज के दिन, टुडे, करंटली. ठीक है. हो सकता है इसमें नहीं लिखा हो क्वेश्चन में कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर करंटली, तो आपको समझना है ग्रामर से. आर है मतलब आज के दिन, है ना. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. 40 तो ऑप्शन ही में नहीं आता. जब यू आर सेइंग 40 बट वेयर इट्स नॉट इन द ऑप्शन. हरी, कृषि, सचदेवा, हर्ष, निवेदिता, 50. हाँ एक्चुअली क्या है, 40 आपने सही बताया था. 40 - 1 is equal to 39 होता है ना. So the right answer is A is the right answer to this question. हाँ नहीं, राउंड ऑफ नहीं, वो सही था, मैं बताता हूं. Which of the answer is here? So it was 40 but one country was suspended, so now we are having 39. तो currently अगर पूछा जाए, अगर 39 लिखा है, so ideally it should be 39 because that country is suspended. अब उसको मेंबर माना जाएगा टेक्निकली कि नहीं, बट आई थिंक इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड. ठीक है. बट विकिपीडिया में स्टिल इट इज रिटन 40. तो ये जो -1 सस्पेंडेड है, विच कंट्री इज दैट? कॉमन सेंस आंसर करो. कॉमन सेंस मतलब it was the member but now it has been suspended. Please do not Google search. Please apply common sense. अगर ये exam hall, imagine you are sitting in an exam hall and this question comes. Which option? इसलिए मैंने ऐसा confusing चारों option दिया because I know you will get confused. अच्छा बताओ, FATF की parent organization कौन सी है? Parent grouping जिससे ये बना है. Please tell me. You will get the answer. अब आपको आंसर पता चल जाएगा. FATF is formed by which grouping? G7.
G7 पहले क्या था? Those who have watched my G7 class must be aware. What was G7 earlier? याद है? I have taught G6, G7 बना, G7 से G8, then again it became G7. Which country was expelled? Russia was expelled. Yes. लेकिन रशिया यहां 2014 में एक्सपेल्ड हुआ था when it had captured Crimea. Yes. लेकिन यहां पे एक्सपेल हुआ आफ्टर बिगिनिंग ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर. ओके, ठीक है. You got it? So G8 became G7 after Russia captured Ukraine, captured Crimea from Ukraine, 2014. ठीक है. Here one recently, जब रशिया यूक्रेन वॉर कब स्टार्ट हुआ? फरवरी 2022. रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड. नेक्स्ट ईयर इन फरवरी 2023 इट वाज सस्पेंडेड. ठीक है. तो ये यहां सस्पेंशन हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद. ओके, बट द आंसर इज रशिया ओनली. ठीक है. सो आप थोड़ा सा लॉजिक से समझते हैं. G7 कंट्रीज तो ऑफ कोर्स वो इजराइल के अगेंस्ट तो जाएगा नहीं, यूक्रेन के अगेंस्ट तो जाएगा नहीं, है ना. So A and C cannot be the answer. European countries are there. So at least think like that. है ना. So at least you can think, huh? Now the next question is India a member of FATF? I'm asking member, मतलब full-fledged member. Don't say कि associate member or something like that. Full-fledged member पूछ रहा हूँ. Yes or no? I'm not saying कि associate member or observer or something like that. Is India a full-fledged member of FATF? Yes, very good. हाँ, yes, yes, India is a member. ठीक है. So हम लोग देख लेते हैं. हाँ, ये तो है. हाँ, ठीक. देखो, these are the members. अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील. अब देख सकते हो. देखो, इसमें ना दो ग्रुपिंग भी मेंबर है. सो बेसिकली इट इज लाइक दिस. 37 + 2 + 1 मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू 40. ठीक है. सो ये 37 कंट्रीज हो गया. टू ग्रुपिंग है. उसमें एक यूरोपियन यूनियन है और दूसरा गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, GCC. एंड दिस वन इज रशिया विच इज ऑल्सो अ कंट्री बट इट इज सस्पेंडेड. लेकिन FATF सस्पेंडेड 24 फरवरी 2023. एंड रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट कब हुआ था? व्हेन रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड somewhere in February 2022. I think 26 February or something it started. So 1 year later it got suspended. तो रशिया जो सस्पेंडेड है इसीलिए इसको जो है 39 माना जा रहा है कई जगह पर. So आप देख लेना whatever is in the exam hall, if it is written 40 go for 40, otherwise 39 go for 39. So if you ask me personally, अगर सस्पेंड कर दिया गया तो उसको -1 आप मान सकते हो. ठीक है. So India is a member, the other countries are member, and these two groupings, European Commission actually European Union ही का है, and Gulf Cooperation Council are also there. तो कंट्रीज आप देखोगे 37 कंट्रीज प्लस 2 ग्रुपिंग इज देयर. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. बाकी आप कंट्रीज देख सकते हो, है ना, कौन कौन और कंट्रीज है. जस्ट यू कैन रीड इट, है ना. सो इट हैज 37 jurisdiction, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, है ना. If both 39 and 40 is written, then of course this type of question should not be asked ideally. But if you ask me, 39 should be the answer. वैसे इसका तरह क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि 39 और 40 दोनों ऑप्शन में दे दिया. ओके, सो दीज आर द कंट्रीज. देखो, ब्लू वाला जो है फुल का मेंबर है, जैसे इंडिया इज अ फुल मेंबर, है ना. रेड वाला सस्पेंडेड है, रशिया इज सस्पेंडेड, आप देख सकते हो. और मेंबर थ्रू यूरोपियन कमीशन, गल्फ कॉपरेशन, ये गल्फ मैं दिखाता हूं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल. सो दिस इज एक्चुअली गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, GCC. सो इट इज कॉल्ड एज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल. Gulf means Persian Gulf. This one is Persian Gulf. I have told you many times, which is now, according to Donald Trump, it is Arabian Gulf. So Donald Trump is now calling it as Arabian Gulf, है ना. Okay, तो इसमें आप देखोगे Gulf countries, and I have told you that this region, this Gulf country is famous for oil and natural gas. ठीक है. तो इसमें कौन कौन है? जो कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है. बहरीन छोटा सा आइलैंड है, स्मॉल. कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान है. बी केयरफुल, येमेन इज नॉट अ मेंबर. ठीक है. ओके. हाँ, GCC and European Union are 2 different groupings, right? Yes, 2. Yes, yes. हाँ. तो Gulf Cooperation Council headquartered in Riyadh, Saudi Arabia, and these are the members. 6 countries are there, है ना? 6 countries. Okay. Similarly, European Union जो है, उस पर मैंने पूरी क्लास ली. I have discussed what is European Commission and what is European Council. So European Union is a grouping of 27 member European countries. ठीक है. Okay.
अरे भाई वही मैं बता रहा हूं कुशाग्रा, प्लीज अंडरस्टैंड. देखो, यूरोपियन यूनियन has a lot of bodies. One is called as European Commission. Actually, two famous bodies. Another is called as European Council. Okay, both are part of European Union. When you watch this class, you will get to know European Council and European Commission. ठीक है, अभी चेंज हुआ है इनके चेयरमैन हेड किसी एक के, either of the two. ठीक है, in this class I had made it 10 months back, but some changes have happened in the European Commission और European Council के चेयरमैन में. You just verify. ठीक है. So European Commission is nothing but a part of it's an organization of European Union only. उसी का हिस्सा है. It's a part of that. So don't get confused. Now let's talk about FATF. मैंने बताया established 1989 to combat money laundering. 2001 after 9/11 terror attack. Terrorism is also financial terrorist financing is also included. Headquarter Paris. देखो 1989 बता दिया. Intergovernmental organization. पेरिस तो क्या 40 लिखा है, but it should be 39. Russia has been suspended. English, French official language है. It's a policy making body, है ना. Peer reviews वगैरह होता है. ये president का नाम I don't think they'll be asking because that will be very difficult अगर president का नाम पूछ लिए. और secretariat जो है ये इनकी secretary है, executive secretary. But I don't think they'll be asking such difficult question. Otherwise बहुत मुश्किल हो जाएगा. Fair. FATF was formed 1987, G7 Paris. We have discussed. अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना. हाँ, 9/11 it is expanded to terrorist financing also. Its mandate मतलब इसका जॉब क्या है, ड्यूटी है ना. और आफ्टर 11 सितंबर टेरर अटैक्स तो पढ़ लेना मैंडेट्स में. मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग है ना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को फाइट करना एटसेट्रा. दीज आर द आइडियाज. अच्छा, कुछ रीजनल स्टाइल बॉडीज है विच हैव सिमिलर वर्क लाइक FATF. ये सब टर्म है, जैसे एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, यूरेशियन ग्रुप, कैरिबियन मींस वेस्ट इंडीज में. ठीक है, सो दीज आर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप एटसेट्रा एट द रीजनल लेवल. अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के लिए इज देयर. ओके, just have an idea about it. So these are the other regional grouping which is helping FATF or something similar to that. है ना. तो आप देख सकते हैं, they are not countries that are not full FATF members but are members of this regional bodies are also entitled to attend FATF meetings. अगर ये सब के भी पार्ट है तो FATF में you can come, your country can come and participate. Observer members कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे IMF, UN, World Bank, OECD, these are also observer members. Asian Development Bank, ठीक है. So prominent observers you should be knowing, है ना. अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है. Now the next is in the context of FATF, call for action refers to what? क्या है बताइए. तो ये दोनों तो होगा नहीं. These two are related with WTO, World Trade Organization. Amber box, blue box, green box. ठीक है. अब कॉल फॉर एक्शन कौन सा वाला है? It's A or B. So it's actually blacklist. A is the right answer. ठीक है. So this you should be knowing. और ग्रे लिस्ट का नाम क्या है, ऑफिशियल नेम? What is the official name of grey list? कोई बता सकता है? Anyone? ग्रे लिस्ट का अदर मॉनिटर जुरिसडिक्शन करके नाम है ना कुछ. हाँ देखो, ब्लैक लिस्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो कॉल फॉर एक्शन है, FATF ब्लैक लिस्ट. देखो ये 2000 से 2000, इट मींस बिफोर 9/11 अटैक्स FATF इज मेंटेनिंग दिस ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट. So call for action is black list और grey list है other monitor jurisdiction. So black list is very strict. If a country is in black list, there will be a lot of economic sanctions, a lot of problem, and grey list थोड़ा कम है. So on one step less. ठीक है. Now, currently, how many countries are there in blacklist? Yes, very good. Some people are answering it even before I'm asking the question, and which is very good. I'm very happy to see. Harsh Sharma, आपका मैसेज टाइप नहीं हो रहा है. I don't know what happened. हाँ, 3 है. ठीक है. There are 3 countries in blacklist. Which of them is not one of them? Yes, now it is right. हाँ, कुशाग्रा, पीयूष, हरी, हर्ष, निवेदिता, you are right. हाँ, आदित्य. ठीक है. कौन से इसमें से ब्लैक लिस्ट में नहीं है करंटली? इस मतलब टुडे, आज. यस. अच्छा, हाँ, ए इज द राइट आंसर.
So basically Iran, Myanmar, ये लंबा चौड़ा नाम है. This is actually nothing but North Korea. ठीक है. The name appears that Democratic People's Republic. It appears that some democratic country is being talked about, but it is North Korea. Fine. So yes, आप देख सकते हो, है ना, है ना. तो कैसे याद रखना है, कुछ ऐसे नेम करके याद रख लेना, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार. So you have to be careful. So that is what you should know. And Ukraine is trying its best that Russia should be added in FATF. October 2024 last year की आर्टिकल है, but fails again, rejected by China and India others. Okay, है ना. हाँ, the Hindu analysis मैंने डिस्कस किया था, राइट. हाँ, तो actually Ukraine is trying कि Russia, because Russia-Ukraine war is happening, so of course Ukraine will want, but Russia but that was rejected by India, Saudi Arabia and South Africa, because India और Russia की बहुत अच्छी दोस्ती है ना. In 2016, I think, or 17, when Vladimir Putin came to India, what PM Modi said, one old friend is better than two new friends, because Russia is one of the oldest friend of India. I hope you are aware. Yes. Okay. Anna. Or if a country is put in blacklist or in gray list, especially in blacklist, what is the problem? Foreign investment will reduce. No one will invest in your country. International trade, embargo means economic sanction will be put. Nobody will be doing business trade with you. Okay, trade disruptions will happen. Of course, the next is maybe some of your money outside international level. If you have, let's say, Anna, let's say you have put money, or the country has put money in other countries' bank, then it might be freezed. Credit rating, जिससे ये पता चलता है कि whether you are a prime lender, whether you that can be affected. Okay, then foreign exchange, many things can happen. Confidence, loss of confidence, है ना. So many things can. International asset भी seize किया जा सकता. Of course, these are the things that can happen. Which of the following is not in the grey list? Read the question carefully and answer it. अब आप पूछोगे कि सर ग्रे लिस्ट में इतनी सारी कंट्रीज है, कैसे याद रखो? But still you can answer it. देखो ध्यान रखना, नॉट पूछा जा रहा है. Which of the following is not in the grey list? और इज लिखा हुआ, यानी आज, टुडे, करेंटली. ये सब ध्यान रखना है एग्जाम में, क्वेश्चन पे. अब ये तीनों को पता नहीं होगा, बट हियर इज द राइट आंसर इज पाकिस्तान इज नाउ आउटसाइड. हाँ, इंडिया इज ट्राइंग इट्स बेस्ट, बट करेंटली आज के दिन इट इज आउटसाइड. सो कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ टिल योर एग्जाम. ओके, सो द राइट आंसर इज ए. जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे दे कैन आंसर इट. ए इज द राइट आंसर. यस अदिति, राइट. हाँ, गुड. एंड कृषि सेज देवा स्विफ्टी कुशाग्रा, यू आर राइट. तो हम लोग देख लेते हैं अपन, है ना. कोट दे आइवरी, आइवरी कोस्ट कहते हैं इसको, ठीक है, वो भी है. देन हेती भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे. इवन नेपाल इज ऑल्सो देयर. मैंने आज चेक किया, देखो नहीं कब का है, 13 जून 2025 को लास्ट अपडेट हुआ था, उसमें मैंने देखा नेपाल इज ऑल्सो देयर, साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो देयर, सीरिया तो चलो समझ सकते हैं, वेनेजुला, वियतनाम, वर्जिन आइलैंड, येमेन इज ऑल्सो देयर, बट आई एम सरप्राइज टू सी दैट साउथ अफ्रीका एंड नेपाल इज ऑल्सो देयर. खैर, when did Pakistan came out? Yes, Kushagra will discuss that. Just wait. No, ये रिपोर्ट आई थी, इंडिया प्लेस की रोल इन ब्रिंगिंग आउट FATF's लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन टेरर फाइनेंसिंग, है ना. नेशनल रिस्क असेसमेंट, NRA कहते हैं कि हाउ मच माय कंट्री कैन बी अफेक्टेड विद टेरर फाइनेंसिंग एटसेट्रा. सो इंडिया हैज कैटेगोरिकली सेड दैट वी आर एक्चुअली फ्लैग्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब क्या होता है? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. यहाँ पर स्टेट का मतलब वो राज्य वाला स्टेट नहीं होता. Here we are not talking about state means a province. Here state means government के सेंस में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हो सकता है. यानी ऑफिशियल गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द टेररिज्म. दैट इज व्हाट स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड नो. So FATF project for putting comprehensive update on terror financing risk. This was the report. And India has learned to have UN Security Council Terrorism Executive Director. So we have long identified it, Pakistan as a state-sponsored terrorism. And India's NRA, National Risk Assessment, flagged, and raised the concern. Flagged means raise the concern, especially from Pakistan. All financial institutions, including banks, are required to enhance due diligence with respect to. अगर पाकिस्तान को ये कोई भी ऐसे कंट्रीज जो कि ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में, इसको लोन देने से पहले ध्यान रखा जाए ना. दैट इज व्हाट इंडिया हैज रेज्ड द इशू.
Although currently Pakistan is not in grey list, but India has raised this issue that yes, whenever a loan is given to Pakistan, means banks should be very careful that whether the money is diverted from some other purpose or not. Okay, because that also happens ना, मतलब लोन लिया गया किसी और मकसद के लिए कहीं और चला गया. So that is what the thing is, that money should not be diverted. So these are the things. Being an NRA by National Risk Assessment, it is followed by all US banks adhering to KYC guidelines. Okay, so US banks वगैरह इसको देखती है FATF report before giving loans or something like that. ठीक है, these are the things being talked about. मैं देख रहा हूँ उसमें कुछ और important है. It is modus operandi adopted for state-sponsored terrorism. Ongoing smuggling of oil from Iran is one of them. Okay, so there is also one thing which is being talked about, according to the officials, कि ईरान से जो है स्मगलिंग वगैरह किया जाता है कुछ oil etc. That is what is also being talked about. कि state sponsoring terror outfit is also okay. हाँ, because when you smuggle something, smuggling से earning होती है ना, पैसा कमाया जाता है. I've told you, arms smuggling, human trafficking, oil smuggling, and many other smuggling. This leads to earning of money, and which money can be used for illicit purpose. Okay, तो ये सब मतलब illegitimate पैसा earn करके फिर of course illegitimate काम किया था. That is what is being talked about. Now, some people were asking about sir Pakistan कब हटा etc. and also let's have a basic idea. थोड़ा सा जान लेते हैं. So 2008 first time added in FATF grey list. 2010 में निकाल दिया, मतलब it came out. Okay. Then 2012 again added in grey list and 2015 taken out from grey list. Then June 2018 again added in grey list. Okay, Pakistan was given 27-point action plan कि आप ये काम कीजिए, then only you will be removed. Then 2000 हाँ, फिर क्या हुआ, फिर I think बीच में फिर हटा दिया गया, तो कुछ something था. 2019 से 21 FATF reviewed Pakistan's compliance money laundering. Pakistan showed progress but remained in grey list. So Pakistan ने बताया कि हम progress कर रहे हैं, but it still remained. So finally what happened was October 2021 also FATF said that you have complied with 26 out of 27 points etc. Finally ये हुआ कि हाँ, this you should remember, October 2022 Pakistan removed from grey list. ये याद रखना है बस. बाकी का रफ आइडिया हो कि कई बार आना जाना हुआ है. Just remember it that many times it was added and removed, added, removed, added, removed, like that. ये important है कि last अगर आप देखोगे, so Pakistan was removed from FATF grey list in October 2022. ठीक है, ये पता होना चाहिए. फिर आप देख सकते हो भाई जो 10 जुलाई की रिपोर्ट है. So it talked about FATF comments on state financing of terror enforces India's position on Pakistan. State financing मतलब again वही, the government is financing. That is what the India has put forward, that the state means the government of Pakistan is supporting directly. Okay, so that is what is being talked about. ठीक है ना. In fact, अभी FATF की रिपोर्ट आई थी कि पुलवामा टेररिस्ट अटैक, गोरखनाथ अटैक, all happened through commerce. ये तो मेरे को भी नहीं समझ में आया. E-commerce site में how it is available, and VPN means virtual private network. Virtual private network, I'm sure you must be aware. These are used to avoid location being tracked. If someone is using VPN, then it is difficult to track the search, Google search of that person and location, etc. And e-commerce sites, I'm not able to understand, because e-commerce site, there is a Flipkart, Amazon, but how can like these types of things available? Well, for me, I mean, it was very difficult to believe. But पता नहीं क्या था, I don't know exactly, but how they get it. But खैर ये जो report आई वही I'm telling you. Because if it is such thing is available, it should be immediately blocked. कि ऐसी चीज तो मिलनी भी नहीं चाहिए ना online. But okay, so these are the things that was actually Pulwama terrorist attack that happened in February 2019, where 40 CRPF personnel had laid down their lives. So इसमें भी कहा गया कि was improvised using the attack aluminum powder procured from Amazon. पता नहीं कैसे, I don't know aluminum powder, I don't know how they make. Improvised लिखा है, component improvised explosive used in the attack aluminum powder. I don't know, like I mean it's very difficult to say. But that is what it is written कि हो सकता है कुछ they tried कुछ aluminum powder लाया हो, उसके फिर कुछ mix किया हो, something like that, and they made such thing. Because ideally speaking, the e-commerce website is not selling these products, these types of things. अब आप 3-4 प्रोडक्ट मिला के मैच करके कुछ बना दिया होगा, so maybe something like that. So these are the things being talked about. Okay, so online, yes, it is said कि online transactions वगैरह का भी use किया गया, something like that. So these are the things being talked about.
तो चूंकि FATF न्यूज में था, दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल अबाउट दिस. ओके, है ना. जैसे दे मिसयूज ई-कॉमर्स साइट्स for procurement including equipment, weapons, chemicals, because directly they cannot buy. I mean, maybe they might have bought different products A, B, C, D, and they might have mixed it, making it something like weapon, because directly तो मिलेगा ना, 3-4 चीज मिला के कुछ बनाया होगा, something like that. This is my guess. God knows better how they could access these things, because such things, even if remotely, should be banned from e-commerce site. कोई भी ऐसी चीज जिससे ऐसा हो सकता है, ऑफ कोर्स, तो बैंड, गवर्नमेंट मस्ट बी रेगुलेटिंग दैट, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. एक चीज मैं बता दूं, दोस्त हु ज्वाइन द क्लास लीड, ये रेस टू एनएलयूज विल बी हैविंग अ सेशन. तो इसको ऐसे करना, आप गूगल पे सर्च करना दिस, यू विल गेट दिस लिंक, lawentrance.com. ठीक है, यू विल गेट दिस, एंड वेयर देयर विल बी 9:30 AM को, है ना, विल बी हैविंग इन द मॉर्निंग 28 जुलाई. कब है डेट? 9:30 है ना, 9:30 morning we will be having this session. So join it if you are a CLLST student. It's free. Otherwise 48 rupees दे करके you can join this class. याद रखिएगा date और timing. That would be. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.